everyone, myself Aditya Raj Sharma. Today we are going to present our phase 2 of our project, which is EDA and methodology. EDA stand for exploratory data analysis and methodology. And our topic is retail stock market behavior analysis. For this, we are going to understand customer purchasing pattern for optimal inventory management. And my team members are Monu Kumar, Rhythm Jain, and me, Aditya Raj Sharma. Now, I would like to call Rhythm Jain for continuing my presentation. Hi everyone, I'm Rhythm Jain. As Aditya introduced me already, uh, let me tell you, as I'm the research lead of the team, so I'm gonna tell you about the project, how we have done the methodology and the ADA process. So first, we'll discuss about the methodology and in the methodology, first we did data understanding. We understood the data. We understood the patterns of data set structure and the characteristics in the data set. And then we cleaned the data where we pre-processed it, where we removed the inconsistencies from the data set and prepare it for the further analytical processing. And then we did association mining, where we used a priori algorithm where where we identified the product relationship and and the purchasing patterns with with the customers, and then we did temporal analysis where we used time series breakdown data into trend, seasonal, and residual components, and we used customer segmentation with RFM, which is recency, frequency, and monetary value. And then we did seasonal analysis where we found out some seasonal trends, monthly trends in the how the product is being sold, and we analyze it, and we track down and put it in the graph. And then in finally we evaluated and validated that how our uh, model is working, how it is giving the results. So now I'll go with the EDA process, where firstly the key insights we found out throughout the uh, ETA is that in the data overview, we found out that 392K total transactions were found, and there are almost about 4,300 customers, and there are about 3,800 products which has been sold. And in the distributions, we say that we saw that the our distribution is skewed pattern in it is in skewed pattern, and we found out the outlier in the data set, and there are many variables follow log nominal patterns. And in the temporal patterns, we found out that weekly seasonally evident, and peak purchasing day, like there was it was Thursday, and clear cyclical behavior, we found out that. And that divide in stocks, like in different countries our stocks were being sold, like the majority of the data was found that it was of UK, and it was 82% of the transactions of UK, as it's a UK based data set, so the majority is from UK. And then top five countries which are of 95% volumes, and then the total countries is 38. So I'll call Aditya for the further explanation of our project, and thank you. This was my time. नाउ वी आर गोइंग टू सी बिजनेस इम्प्लीकेशन. इसके अंदर हम जनरली ये देख रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स अपना के हम अपने बिजनेस की चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन से हमारे बिजनेस में क्या क्या फर्क आएगा. हम अपने स्टॉक को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे इसके थ्रू, जो कि रिड्यूस करेगा स्टॉक आउट्स 20% से. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स. प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम किस प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करें कि उसका एवरेज एओवी कैसे इंक्रीज कर सके. तो अगर हमारी प्रोडक्ट प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी रही, अगर हमने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट प्लेसमेंट करी, तो हमारी जनरल एओवी यहाँ पे 15% से इंक्रीज कर सकती है. हमने चेक करा. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो यूज ट्रेंड है और सीजनल कंपोनेंट को जब हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा
इंप्रूवमेंट किस हिसाब से आ रहा है, एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट किस हिसाब से आएगा। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे प्रॉपरली करें तो इन जनरल हमारे पास ये 25% से इंक्रीज करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी कस्टमर स्ट्रेटेजी। कस्टमर स्ट्रेटेजी के अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम कॉमन टाइप ऑफ कस्टमर को एक तरह से स्पेसिफिक स्टॉक प्लानिंग के अंदर क्लस्टर कर रहे हैं, और जिसके थ्रू हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटेंशन है वो इंप्रूव 10% से करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी लिमिटेशन, फ्यूचर वर्क एंड कंक्लूजन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। इन लिमिटेशन सबसे पहले हमारा पॉइंट ये आता है कि ये जो डेटा है हमारे पास सिर्फ 1 ईयर का अवेलेबल है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें नहीं देख सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक यूके डोमिनेंट डेटा सेट है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट कंट्रीज का कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, यूके पे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है हमारा ये डेटा सेट। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नो प्रमोशनल फैक्टर, इसके अंदर कोई प्रमोट नहीं करा गया है, जिसके अंदर से एक ये बिजनेस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज आवर फ्यूचर वर्क। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग विद द हेल्प ऑफ अरीमा। अरीमा एल्गोरिथम की हेल्प से हम अपनी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा सबसे मेन स्टेप है कि हम रियल टाइम रिकमेंडेशन इंजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कि हमें रियल टाइम में अपनी रिकमेंडेशन को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सके। लास्ट में हम ये करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे हम अपने इसे इन्वेंट्री सिस्टम के साथ, जिससे हम अपने बिजनेस को रियल टाइम में प्रॉपरली एक बेस्ट डिसीजन दे सके कि हमें किस फ्लो में चलना है। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल मोनू फॉर द कोड पार्ट। ही इज गोइंग टू गिव अस अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग इन आवर कोडिंग पार्ट। सो हेलो एवरीवन, आई एम अ कोडिंग लीड। सो बेसिकली उसके लिए मेरे को मेरा मैकबुक की जरूरत पड़ेगी। मतलब मैं ऐसे खड़े होकर कोडिंग वाला पार्ट तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो लेट्स जंप टू द so let's start with the coding part. So this is our directory for the retail stock market behavior analysis. So we can see here some folder structure like data, notebooks, reports and src. So basically in the data we have put our all the raw data. Basically for that we are using, currently we are using uk dataset as a main dataset, and also for the experiment part we also gone through the kaggle dataset. Basically we are trying to find different dataset from the different source, and one of them we found from the kaggle. So we also tried our performance on kaggle dataset, but that was not that much accurate, so we shifted to the uk database. And then in the notebook we can see all our tasks that we have completed till now. So यहाँ पे पहला जो फाइल है हमारा डाटा एक्सप्लोरेशन का है। बेसिकली यहाँ पे हम अपने जो भी हमारे पास डाटा सेट है ना, हम उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके लिए हमने different graphs plot किए हैं, and all other things we have done here. And for that and for the next part we also perform the data pre-processing, एंड उसके लिए भी हमने काफ़ी सारी डायग्राम्स, ग्राफ्स और अलग-अलग चीज़ें परफॉर्म की हैं। वी यू कैन शो ऑल द डाटा कोडिंग पार्ट इन आवर गिटहब अकाउंट. We can also see some graphs. We can also see some graphs like for the total sale month wise and all the things in this part also. And next we move to the association analysis. Here also we performed our market basket analysis for the so that we can get more familiar with our data set. और यहाँ पे भी हमने बेसिकली व्हाट वी थिंक कि जितना हम विजुअली चीज़ों को समझ सकते हैं दैट विल बी बेटर। सो उसके लिए हमने जितनी भी हमारा टास्क परफॉर्मेंस है ना, उसमें हमने डाटा को एज अ प्लॉट और एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ कुछ डाटा सेट यूज किया है। You can also see there all the data set also here. And then we went to the next part, that is temporal analysis. So यहाँ पे बेसिकली हम टाइम सीरीज या फिर जो भी सीजनल हमारे ट्रेंड्स है वो सबको हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। एंड देन वी ऑल्सो कस्टमर सिगमेंटेशन पार्ट में हमने सारे जो भी कस्टमर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, लाइक हमारे जो भी RFM के मैट्रिक्स थी, जो जो भी हमारे के मीन वैल्यू थी, जो भी हमारे एल्बो मेथड इसमें हमने कुछ फाइंड आउट किया था, तो वो सब हमने इस वाले पार्ट में रखा है। एंड देन वी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेपरेट पार्ट फॉर द सीजनल एनालिसिस, जहाँ पे हम सीजन्स के अकॉर्डिंग एंड जो भी हमारे प्लेसेस है उसके अकॉर्डिंग
सारे चीज़ों को हमने फ़िल्टर आउट करने की कोशिश की है। उसके लिए भी हमने काफ़ी सारे ग्राफ्स और ये सब प्लॉट किए हैं चीज़ों को। एंड देन जियोग्राफिकल एनालिसिस, जहाँ पे हम जियोग्राफी के अकॉर्डिंग लाइक यूके एंड अदर अदर स्टेट में बेसिकली मेजरली हमारा डाटा जो है वो बेंड कर रहा है टुवर्ड द यूके डाटा सेट। बट अदर देन अदर देन अदर देन आल्सो यहाँ पे कुछ अदर कंट्री की भी डाटा सेट है, तो हम यहाँ पे जियोग्राफिकल एनालिसिस में हम उसको देख सकते हैं। एंड बेसिकली द मेन इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा आई थिंक क्या बोलते हैं, मतलब हार्ड भी यही था आई थिंक, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। सो इसमें अभी हमारे बहुत सारे काम ऑलरेडी मतलब पेंडिंग्स हैं, वो हमारा हमने फेज 3 के लिए अलाइन करके रखा है। बट हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें हम इसमें हमने ट्राई किया है कि कुछ-कुछ चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट कर सकें, कुछ-कुछ पैटर्न ढूँढ सकें। तो उसके लिए हम अरीमा एल्गोरिदम को वी आर गोइंग टू यूज़, बट अभी के लिए हम ज़्यादा उससे फ़ैमिलियर नहीं है, सो वी कांट एक्सप्लेन द कंप्लीट अरीमा प्रोसेस। एंड अदर देन आल्सो यहाँ पे रिपोर्ट वाले सेक्शन में we have also complete basically we are targeting to get the full marks according to the marking scheme marking schemes you all have shared. So उसके लिए हमने रूल बनाया था कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकें। तो उसके लिए हमने कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया यहाँ पे। एंड देन आल्सो yeah, so basically that's all the main crux of the this directory. So yeah, that's it.